Assalamu alaikum. My name is Noor Iman. Today we have with us Vishaal Ahmed Shakir Rajput, a seasonal legal practitioner based in Lahore. With a strong background in legal tech and extensive experience, he has made his mark in the legal field. Whether in the courtroom, as a mentor, lecturer, or advocate for marginalized communities, he is dedicated to delivering strategic legal solutions that meet client needs. His journey is defined by a commitment to learning and making a lasting impact in the legal landscape. Uh, Thank you. We're pleased to have you with us today. Would you like to add Hey, anything Vishaal. to the introduction? Thank you so much for having me, and it's a pleasure to contribute for whatever little knowledge that I have in your new endeavor in your new platform, and I'm looking forward to it. That it goes as we have planned, and we produce something uh, of informational, beneficial knowledge for our viewers and the law students. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वी विल बी क्रिटिकली एनालाइजिंग द लॉ ऑफ बेल इन पाकिस्तान. सर आप प्लीज़ उसको आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या प्रोसेस है पाकिस्तान में, व्हाट आर द लॉज दैट आर इन प्लेस. तो बेल जब हम कहते हैं, बेल इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्टेज इन द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. जब भी हम क्रिमिनल लॉ को डील करते हैं या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो लॉ ऑफ बेल के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता. बेल इन अ नॉर्मल एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म is the release of the alleged accused person from the custody of the police. Because अरेस्ट कौन करता है हमारे मुल्क में जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी भी तरह का. अभी हम उस डिबेट में नहीं जाते कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ऑफेंस कमिट हो गया, पुलिस अरेस्ट करना चाहती है उस अलेजेड अक्यूज पर्सन को जिस पे इल्जाम लगाया गया. अब हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि किसी को भी उसकी आज़ादी से उसकी आज़ादी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए. उसका जो राइट टू लिबर्टी है वो कर्टेल नहीं होना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस. हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो फ्री और अपनी मर्जी से मूव कर सके, उसकी लिबर्टी खराब ना हो. अब यहाँ पर जब पुलिस इस तरह का एक इनिशिएटिव लेती है कि हमें एक बंदे को अरेस्ट करना है, तो उस बंदे को एक खतरा लाक होता है कि पुलिस मुझे अपनी कस्टडी में ले लेगी. उस कस्टडी से बचने के लिए लॉ ऑफ बेल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और वो अब तक ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स फ्रॉम लाइक एजेस. जितना भी हम एंग्लो सेक्शन जूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़े उसमें भी लॉ ऑफ बेल का जिक्र हमें मिलता है. तो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में प्रिवेल किया गया है, जिसमें हम जुडिशियल बॉडी के थ्रू हमें पुलिस की कस्टडी से बचाया जाता है और श्योरिटीज की कस्टडी में दे दिया जाता है कि अब आपने इंश्योर करना है कि इस बंदे को, इस अलेज्ड एक्यूज को जब जहां जैसे बुलाया जाएगा ये वहां पे हाजिर होगा. बिकॉज आप ट्रायल का प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते. यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस और द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव योर गिल्ट. तो आपको उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है. नेवरदलेस आपको उस पुलिस कस्टडी से बचाव मिल जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा कि आपको थाने में बंद नहीं किया जाएगा या आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बेल के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं. All right, thank you. That was a very insightful, brief introduction of the concept. Definitely, the concept of bail is fundamental to the criminal justice system. How would you assess the effectiveness and fairness of the current bail law in Pakistan? Are there कोई भी इस तरह की key strengths हैं या shortcomings हैं that you would like to highlight? So Noor, despite the fact that we face like a full throttle criticism on the judicial system of Pakistan, I would say that I have personally been a practicing lawyer, a practicing litigator. I have encountered that law of bail, especially in Pakistani courts, are highly and I have encountered it. और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक कंटेस्टेड बेल है तो इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ट्रायल. रीजन भी पाकिस्तान में और मेरी अपनी प्रैक्टिस और हमने जो अपने सीनियर से भी सीखा और उनसे सुना
majority of the cases जो पाकिस्तान में किए जाते हैं वो लिटिगेट फुल पावर और फुल फोर्स के साथ किए जाते हैं टिल द स्टेज ऑफ बेल। रीजन क्या है कि जब भी यहाँ पे कोई कंप्लेनेंट कोई केस दर्ज करता है, एफआईआर दर्ज करता है, उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि उस अक्यूज को थाने पहुंचा दिया जाए, उसको कस्टडी में दे दिया जाए। उसके कुछ इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ उनको ये भी जो डार्क साइड है हमारे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कि उनको ये इस चीज़ का भी ख्याल होता है कि चले इन्हें थाने भेजेंगे तो कुछ रोल हो जाएगी, कुछ इनको फिजिकल टॉर्चर में सब्जेक्ट किया जाएगा। तो पूरी पावर जो प्रोसिक्यूशन होती है उसकी होती है कि बेल ना हो, इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। सिमिलरली डिफेंस की कोशिश ये होती है कि यार हम किसी भी तरीके से पुलिस कस्टडी में ना जाएं, हमें जेल ना भेजा जाए, हमें पुलिस के हवाले ना किया जाए, तो हम उस चीज़ को बचा के रखें। आप देखेंगे और बाकी प्रैक्टिसिंग लॉयर से भी इफ व्हेन यू गेट इन टच विद देम दे विल टेल यू द सेम कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस और मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेनेंट्स लूज द इंटरेस्ट इन लिटिगेशंस आफ्टर द बेल स्टेज, क्योंकि वो उसको फर्दर परस्यू नहीं करते। चलान आते आते टाइम लगता है, ट्रायल एक लंबा लेंथी प्रोसीजर है। तो मेजॉरिटी और आपका जो फुल फोर्स में आप जब भी किसी केस में पावर लगाते हैं तो क्रिमिनल केस के अंदर खास तौर पे बेल स्टेज पे लगाई जाती है। अब इस पूरी क्रिमिनल बेल का जो हमारा कंसेप्ट है ये दो हेड्स के अंदर प्राइमरीली डिवाइड किया जाता है। वन इज बेलेबल ऑफेंस एंड द अदर वन इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, दोनों की आपकी स्कीम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होती है, दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। और उसके बाद फिर हम आते हैं प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल की तरफ। बट अगर हम इसको समराइजली थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो प्री अरेस्ट बेल क्या हम उसे कहें बेलेबल ऑफेंस में जब बेल हम करवाते हैं, प्री अरेस्ट पे हम बाद में आ जाएंगे। बेलेबल ऑफेंस में बेलेबल ऑफेंस के अंदर एज the term itself is self-explanatory that it is the offense जिसको लेजिस्लेटर ने बेलेबल दिया गया है कि इसमें आपको बेल मिल जाए। तो जब आप किसी बेलेबल ऑफेंस में अदालत के पास जाते हैं तो मेरा स्कीम ऑफ आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना होता है कि सर माय बेल शुड बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, ये मेरा हक है कि मुझे बेल दी जाए। इससे मुझे अदालत की डिस्क्रेशन के ऊपर प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में देयर आर लाइक प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स अवेलेबल जहाँ पे इस बात को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम की जाती है। देन देयर कम्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ CRPC are those offences against whom the legislators have said that these offences are not bailable, that court should not allow bail in these circumstances and these offences. Having said that, अगर अब बात कर रहे हैं according to the rights of the citizens of Pakistan, the fundamental right to liberty, हम ये कहते हैं कि यार right to liberty दिया गया, but again that right is not an absolute right. It is subject to law and restrictions imposed by law. अब उसी लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। डिस्पाइट दैट फैक्ट द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान has very rightly so used their discretion to allow bails in even non-bailable offenses. We get bails in non-bailable offenses on daily basis. So I would say that the courts have very generously tilted towards the rights of the proposed accused or alleged accused person to protect their right of freedom, their right of liberty. So इसलिए I would say and I am of the opinion that the bail system of Pakistan is very effective and very much helpful towards the alleged accused person or the proposed accused person कि अदालतों की ही कोशिश होती है कि इनको रिलीफ दिया जाए। Then there comes the like two different stages of bail. First is pre-arrest bail and the second one is post-arrest bail. आपको यहाँ तो जैसे ही FIR हुई है, अरेस्ट करने से पहले आपको बेल मिल सकती है या अरेस्ट करने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है,
अदालत की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक ऑफ द बैट की जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, each and every single case that I have personally litigated on the bail stage, हर bail stage के ऊपर circumstances के ऊपर कोर्ट के डिमीनर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं। There is no hard and fast rule that can describe कि इस offense के अंदर apart from that offense is a bailable offense or not, नॉन बेलेबल ऑफेंस की हद तक जब भी हम कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लिटिगेट करने जाते हैं तो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल के ABC बोलेंगे तो बेल हो जाएगी। ईच एंड एवरी सिंगल केस हैज देयर ओन मेरिट्स, जज की अपनी डिस्क्रेशन, पुलिस की अपनी फाइंडिंग्स और जो भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल हो उसके मुताबिक इस पूरे बेल के कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। एंड आई पर्सनली फेल्ट कि कोर्ट इसको बहुत इफेक्टिवली लेकर चलते हैं बिकॉज देयर इज अ फ्रीडम ऑफ अ पर्सन एट स्टेक। तो ऑनरेबल कोर्ट्स की भी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से उस फ्रीडम को वायलेट ना किया जाए और उस केस को टेंटेटिव असेसमेंट करते हुए ही इस तरीके से देखा जाए कि अगर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है या कोई रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ पुलिस की डिमांड के ऊपर उस बंदे की जो फ्रीडम है या राइट टू लिबर्टी है वो करटेल ना किया जाए। My question to you is that bail decisions often involve a delicate balance between the rights of the accused and the interests of justice. In your opinion, does the current bail law strike an appropriate balance between these two considerations, or have you seen any practical examples of this if you can provide us? Okay, so when we say right of an accused person, what do we mean by that? If a person has been nominated in an FIR, he has certain rights, right? If we are to go to the Article 10A and Article 10 of the Constitution, it's like safeguard to unnecessary arrest and detention and right to fair trial. तो जब भी किसी एक्यूज के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो उसके कुछ राइट्स हैं। He has a right to counsel, he has a right to make his defense, and he has a right to be protected from unlawful detention. हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर की हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, स्पेशली क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। एक हवाला मैं देता चलूँ शुगरा बीबी केस का, इट्स लाइक अ वेरी हाईली नोटेबल केस इन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जहाँ पे ये कहा गया कि एक ही वकूए की 2 FIR नहीं होंगी। बट ये जजमेंट इस हद तक महदूद नहीं है। इस जजमेंट को अगर आप डिटेल में रीड करें तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके से मैकेनिकल अरेस्ट नहीं हो सकती। व्हेन वी से द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल अरेस्ट, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो आई वुड से दैट मैकेनिकल अरेस्ट आर दोस अरेस्ट जहाँ पे पुलिस मेयरली आफ्टर द लॉजिंग ऑफ एन FIR बंदे को जाके अरेस्ट कर लेती। They don't go into investigation, they don't listen to that person. The primary focus would be कि हम जाएं और इस बंदे को अरेस्ट कर लें क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह का लोगों में परसीव किया जाता है कि पर्चा दर्ज होना, FIR का लॉज होना would be enough to arrest someone. But over a course of time and through judgments इस बात को क्लियर किया गया कि lodging of an FIR, मुकदमा दर्ज होना, is just to initiate the process of criminal administration of justice. It does not speak to the guilt of proposed or alleged accused person. So, हमें सीखने को ये मिला कि पुलिस के पास ये discretionary power है that they have to look into the merits of the case and then decide whether they want to arrest someone or not. बट एक बात आती है कि कोई भी कंप्लेनेंट बिला वजह उठ के तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करता। अगर उसके साथ कोई इज अ विक्टिम या उसके साथ किसी तरह की ज्यादती हुई है तो ही हैज टू इनिशिएट द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ही हैज टू इनिशिएट द प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में कुछ राइट्स जहाँ पे अक्यूज के हैं उसी तरह कुछ राइट्स उस कंप्लेनेंट या उस विक्टिम के भी। सिमिलरली कुछ जो राइट्स हैं वो पुलिस और law enforcement agencies के भी हैं, that they want to conduct a fruitful investigation. And when I say investigation, in a stricto sensu, it means a collection of evidence. And when we say collection of evidence, अब उसमें भी different views हैं कि evidence क्या है, evidence
वही होगा जिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगी या कोई भी चीज़ जो पुलिस कलेक्ट करे उसका एविडेंस लिया जाएगा. इन माय पर्सनल व्यू आई बिलीव के वो चीज़ जिस पे जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता वो एविडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी. हैविंग सेड दैट दैट्स अनदर डिबेट. बट पुलिस का काम क्या है? सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना और फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन करना. उसमें एक फैक्टर ये आता है कि अगर हम उस प्रपोज अक्यूज को अरेस्ट नहीं करते तो क्या ये मुमकिन है कि वो प्रपोज अक्यूज या एलिजेड अक्यूज पर्सन जाके एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दे, वो जाके विटनेस को इन्फ्लुएंस कर दे, वो जाके किसी भी तरह टेम्परिंग कर दे किसी तरह प्रोसिक्यूशन केस के साथ. तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में रखा जाता है. इन सारी चीज़ों को अदालत ने मद्देनजर रखना होता है. जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 10 हमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है जो आई सपोज लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल द ले पर्सन आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एनी टाइम a police official has to arrest you, there must exist reasonable grounds before your arrest. कोई भी पुलिस वाला आपको मुंह उठा के अरेस्ट नहीं कर सकता. इवन के आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, सिर्फ ये नहीं होगा कि एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि हमने तुम्हें अरेस्ट करना ही करना. देयर मस्ट एग्जिस्ट रीजनेबल ग्राउंड्स बिफोर योर अरेस्ट. कि पुलिस ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, कुछ ना कुछ मेरिट्स को देखना है, एंड देन दे शुड डिसाइड कि क्या हमें इसकी फिजिकल कस्टडी रिक्वायर्ड भी है या नहीं. इस प्रिंसिपल को ही अदालतें भी बेल स्टेज पे डिस्कस करती हैं. अब हम जब बेल स्टेज की बात करते हैं, जैसे आपने कहा देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द security and the safety of public at large and the rights of an accused person. So as I've said earlier that each and every single case has its own merit. जब आप प्रैक्टिकली बेल को आर्ग्यू करने जाते हैं तो देयर कम्स अ पुलिस रिपोर्ट, जो जिसको आम जबान में या लोकल जबान में कहें तो हम कहते हैं रिकॉर्ड आना चाहिए. That record are actually the zimnis of police, the police diaries, which no one is entitled to see apart from the judge himself. ना उसे प्रोसिक्यूशन देख सकती है, ना उसको डिफेंस काउंसिल देख सकता है, ना अक्यूज देख सकता है, ना कंप्लेनेंट देख सकता है. वो सिर्फ और सिर्फ जज देख सकता है. उन डायरीज में होता क्या है? उन डायरीज में पुलिस ओपिनियन होते हैं कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उससे हमें क्या समझ आ गई. अदालत एंड let me just say it out very clearly that these opinions are not binding on the courts. ये किसी भी सूरत में बाइंडिंग नहीं होती. It's just to give a reference to the judge कि पुलिस अब तक क्या कर रही है. अब उस रेफरेंस को माइंड में रखते हुए एंड आफ्टर हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ द काउंसिल्स, कंप्लेनेंट एंड द डिफेंस काउंसिल, द जज हैज हिज डिस्क्रेशन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस टू चेक एंड क्या उसे हम कहेंगे कि उसको उसने जज करना होता है, अपने एडजुडिकेट करना होता है कि आया इस पर्टिकुलर बंदे को पुलिस कस्टडी में भेजना जरूरी है या नहीं है. उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. नेचर ऑफ ऑफेंस आ जाता है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस आ जाता है. मतलब एक तो आप नॉर्मल कत्ल करते हैं, किसी को आपने आपकी सेल्फ डिफेंस में आपने कत्ल कर दिया, दैट इज आल्सो 302, और किसी को आपने मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, दैट इज आल्सो 302 केसेस. तो दोनों केसेस के अंदर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इज हाईली डिफरेंट. तो अदालत इस चीज़ को भी देखती है. अदालत इस चीज़ को भी मद्देनजर रखती है कि क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल हैं टू कनेक्ट द alleged offender with the commission of an offense. जब वो इन चीज़ों को देखते हैं एंड देन क्या उस पर्टिकुलर alleged accused पर्सन का कोई पास्ट रिकॉर्ड है या नहीं है, क्या इस तरह की कोई चीज़ है कि ये दोबारा भी वो ऑफेंस कर सकता है. क्योंकि हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से कि किसी को एंटीसिपेटरी ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जा सकती. यू कैन नॉट पनिश एनीवन और एनी पर्सन फॉर द एंटीसिपेटरी ऑफेंसेस के लिए आगे जाके ये ऑफेंस कर सकता है. जब तक कोई ऑफेंस हो नहीं जाता तो उसको इस तरीके से सजा या उसके राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लिबर्टी कर्टेल नहीं किया जा सकता. तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखने के बाद अदालत इस चीज़ का फैसला करती है कि क्या हमने इसको बेल देनी है या नहीं देनी. तो आई बिलीव दैट like a very harmonious kind of like mechanism available in the courts of Pakistan. If हर केस को and in my own personal experience that every bail I've argued, हर जज ने whether the lower judiciary judge or the honorable justices of high court, उन्होंने proper hearing, a right of proper hearing दिया है.
उस केस को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की है, एंड देन दे हैव डिसाइडेड दैट वेदर द बेल शुड बी अबॉर्डेड और नॉट. So I would say yes, there is a quite good balance between the rights of an accused person and the security and the safety of public at large, along with the rights of the complainant as well. Yes. There is a saying that goes like, the grant of bail should be a general rule and refusal should be an exception. तो जब हम I was just going over CRPC और 497(2) की जब हम language पढ़ते हैं तो उसमें there is written कि there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt. I can't help but think कि ये sufficient grounds क्या है और ये I think कि ये थोड़ा grey area provide नहीं कर रही है हमारी police को या फिर. So when you said the famous saying that the grant of bail should be a rule and refusal should be an exception, you are talking about the one aspect of 497. Basically, जब आप 497 को पढ़ते हैं तो 497 CRPC provide two tiers of offences. First are the prohibitory clause offences, and second are non-prohibitory clauses of offences. So when we are dealing with non-prohibitory clauses of offences, वो offences जो prohibition clause के अंदर नहीं आते. The point is what is prohibitory clauses? Prohibitory clauses or prohibitory offences are those offences जिसमें या तो death penalty की सजा हो, या जिसमें life imprisonment हो, या 10 साल तक की सजा हो, तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया और बाकी offences को नॉन बेलेबल offences को दूसरी कैटेगरी में रख दिया. जब हम 10 साल से कम के ऑफेंसेस की बात करते हैं तो उसमें थ्रू द लाइक थ्रू ऑफ जजमेंट्स ये बात सामने आई कि जजेस ने एक हार्मोनियस डिसीजन लिया दैट ग्रांट ऑफ बेल in the non-bailable offences which does not fall in the prohibitory clause, the grant of bail should be the rule and refusal should be the exception regarding the reasonable grounds. As I've said earlier, that there must exist a reasonable ground to connect the alleged offender or alleged accused person to the commission of an offence. अब ये किस तरह पता चलता है कि grounds of arrest क्या है? पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है अपनी, तो उस इन्वेस्टिगेशन के कुछ ओपिनियन ड्रॉ करती है एंड दोज ओपिनियंस आर शेयर्ड विद द कोर्ट. अब वो अपने जिम्मेदारियों के थ्रू कर सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू कर सकती है, कंप्लेनेंट काउंसिल खुद कर सकता है, और कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन पे भी उस चीज को जज कर सकती है, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है, जस्ट टू चेक दैट वेदर देयर एग्जिस्ट एनी रीजनेबल ग्राउंड. अब जब हम रीजनेबल ग्राउंड की बात करते हैं तो इट हैज द सब्जेक्टिव अप्रोच टच टू इट. अब इस पे एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है which says that the reasonable grounds must have the objectivity in it that any person of a prudent mind would believe कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है या इसका कमीशन हुआ है. तो लेकिन इसके अंदर प्रैक्टिकली इट्स अ सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या ये एविडेंस या क्या जो चीज़ें जो ग्राउंड्स पुलिस बता रही है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस इस बंदे ने किया है वो रीजनेबल है भी या नहीं है, कुछ समझ आ भी रही है, किसी प्रूडेंट माइंड को लगेगा भी या नहीं कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है या नहीं किया. अगर अदालतों को ये लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, पुलिस के ओपिनियन में हो सकता है पुलिस कहते हैं कि जी अब मिस्टर ए ने ऑफेंस किया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गुनहगार है, he has been found guilty of this particular offense, और इन ABC reasons की वजह से and they don't categorize like ABCs इतनी efficiently तो वो काम नहीं करते, बट वो एक ओपिनियन ड्रॉ कर देते हैं कि कुछ वजूहात जज पढ़ लेते हैं, कंप्लेनेंट काउंसिल की तरफ से सुन लेते हैं कि इन वजूहात की वजह से हमारा ओपिनियन ये है कि इस बंदे ने जुर्म किया है. अब अदालत ये देखती है कि क्या ये जो वजूहात बता रहे हैं क्या ये रीजनेबल ग्राउंड्स बनती भी हैं या नहीं बनती. अगर the presiding officer, and I again remind you that it is a discretionary power of the court, it's not like binding power or it's not your right, but the discretionary power of the court, and the presiding officer believes that these are not reasonable grounds and the matter requires further inquiry into it, then that benefit must be extended to the accused, as since accused is the favorite child of law. तो उसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसमें फर्दर इंक्वायरी की जो चीज़ है वो सामने आती हो, तो जजेस जो है बेल अलाउ करते हैं.
अब जो चीज़ें हम जैसे हम 497 की बात करते हैं, यूजुअली वी यूज दिस particular section for post arrest bail, but even if you are going for pre arrest bail under 498, हम इस फर्दर इंक्वायरी के केस की ग्राउंड को अपनी प्री अरेस्ट बेल की ग्राउंड के अंदर भी लेकर आते हैं, अलोंग विद द मैला फाइडे ऑफ द कंप्लेनेंट। के कंप्लेनेंट की मैला फाइडे है, अलोंग विद दैट देयर इज लाइक रीजनेबल ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी, इस केस को फर्दर इंक्वायर करना चाहिए। इसकी एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आई वेरी रिसेंटली आर्ग्यूड अ बेल ऑफ नेग्लिजेंस ड्राइविंग। उस नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और दोनों ड्राइवर्स को चोटें आती हैं। दूसरी पार्टी एफआईआर दर्ज करवा लेती है और केस जो है बेल स्टेज पे आ जाता है। आई वाज डिफेंडिंग द अक्यूज्ड पर्सन। माय लाइन ऑफ आर्गुमेंट वाज कि कौन ऑफेंडर है जिसका तयन स्टेज पे नहीं किया जा सकता, एग्रेसर कौन है और एग्रेस अपॉन कौन है, ये अभी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये बातें डिसाइड होंगी आफ्टर द डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एट द ट्रायल फ्रॉम द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। अब इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर पुलिस का ओपिनियन ये था कि जो मेरा क्लाइंट है, जो अलेजेड ऑफेंडर था, उसके अंदर अलेजेड अक्यूज्ड पर्सन था, पुलिस के ओपिनियन के मुताबिक ही वाज गिल्टी। पुलिस सेड कि ये गिल्टी है और हमें इसकी अरेस्ट जो है वो दरकार है, हमें इसको अरेस्ट करना है। डिस्पाइट दैट फैक्ट, इसी ग्राउंड के ऊपर कि अभी इस चीज़ को फर्दर इंक्वायर करने की ज़रूरत है कि किस बंदे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, अदालत ने बेल ग्रांट की एंड नाउ द केस इज ऑन द ट्रायल स्टेज। So that is what is meant by the reasonable grounds and the case of further inquiry. थैंक यू। मूविंग ऑन, एक जो आम आवाम के दिमाग में जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि मे बी द बेल प्रोसेस इज समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज सोशल स्टेटस, वेल्थ या किसी भी किस्म के पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो to what extent do these factors affect the impartiality and equity of bail decisions in Pakistan, and how might this impact the public perception of the justice system? Okay, that's a very interesting question and it covers a very broad area of the bail stage. When we say bail, हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन में देखा उसका कि बेल होती क्या है, a temporary release from the custody of the police. But for that release, there must exist a reasonable person or some reasonable bail bonds जो इंश्योर करते हों कि ये बंदा जो है वो भागेगा नहीं. He will participate in the investigation, he will participate in the due process of law और वो अपना ट्रायल को फेस करेगा. अब जब हम इस सारी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, then the question arises that what are bail bonds and what are the sureties. So I would just take a moment to explain it for the viewers that bail bond is actually the property that you pledge to the court कि ये प्रॉपर्टी मैं प्लेज करता हूँ कोर्ट के अंदर कि अगर मैं नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी आप जब्त कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आप अपनी कस्टडी में ले लीजिएगा। सिंस आप योर बिलीव कि प्रॉपर्टी जो है वो वैल्यूएबल चीज़ होती है, उसके लिए आपको उसके आपकी मॉनेटरीली एक आपकी एप्लीकेशन होती है, उससे फंड्स एसोसिएट होते हैं, तो आपको बेल बॉन्ड रखवाते हैं। अदालत कभी कैश नहीं लेती, उसके जो भी वैल्यू अदालत जब डिसाइड करती है कि उसको इस अमाउंट का बेल बॉन्ड चाहिए, तो आप उसकी वैल्यू के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी अदालत में प्लेज करते हैं। तो अगर आप पेश नहीं होते तो अदालत वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है। अब उस वो एक काइंड ऑफ लाइक इट्स अ श्योरिटी फॉर द कोर्ट कि ये बंदा आ जाएगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो प्लेज की है। देन देयर इज अनदर कांसेप्ट ऑफ श्योरिटीज। बेल बॉन्ड एक अलग चीज है एंड श्योरिटीज आर अ डिफरेंट थिंग। Sureties are the people who speak on your behalf that I take full responsibility for this alleged accused person, that I will make sure he will attend each and every single hearing at the proposed time and the proposed place, that is court. तो वो उस वक्त पे हाजिर होगा, मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ, मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। So ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं they run along with the bail concept. कोई भी बेल मेजोरिटी जब हम डिस्कस करते हैं तो श्योरिटीज और बेल बॉन्ड के बगैर नहीं होती। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल स्टेटस एंड द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग थिंग, तो वो इस हद तक तो लाजमी बेल को इन्फ्लुएंस करते हैं। रीजन बीइंग, एक ऐसा बंदा जिसको एलिजेड किया गया है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और जरा हीनियस नेचर का,
अदालत समझती है कि उसके अरेस्ट के लिए रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते, केस फर्दर इंक्वायरी का है, इसको बेल ग्रांट कर दो। अदालत कहती है कि मिस्टर ए, आप हमें 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड्स जमा करवाएं और 2 श्योरिटीज ले आएं, फिर 2 ऐसे बंदे ले आएं जो इस चीज़ की गवाही दें कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर होंगे एट एवरी डेट ऑफ हियरिंग और आप भागेंगे नहीं। अब एक इंसान जो हार्डली कुछ पैसा कमाता हो, वो कहाँ से 1 लाख रुपए की बॉन्ड की उसकी वैल्यू के मुताबिक कोई प्रॉपर्टी लेकर आएगा? No, that's very difficult. When I was dealing with some pro bono cases in different jails of Punjab, तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया विद लॉ फर्म कि हम जो है जेल्स के अंदर जाएंगे और वो लोग जिनकी जो लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम प्रो बोनो बेल्स लिटिगेट करेंगे। We got like hundreds and thousands of cases. हमने उसमें बेल्स को आर्ग्यू करना शुरू किया। Apparently it came to that stage जहाँ पे वो लोगों को जब हम कहते थे कि आपकी बेल हो गई है, अब आपने बेल बॉन्ड्स जमा करवाने हैं और श्योरिटीज लेकर आनी है, तो दे यूज्ड टू से कि अब ये पैसे हम कहाँ से लाएं? इससे बेहतर तो ये कि हम इधर जेल में बैठे हैं, हमें 3 वक्त का खाना तो मिल रहा है। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि डिस्पाइट कि आपकी बेल हो गई है, और देयर लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ केसेस जहाँ पे लोगों ने अपनी सज़ा से ज़्यादा, मतलब अगर उन्हें सज़ा हो जाती कोर्ट ऑफ लॉ से और जितनी उन्हें सज़ा होनी थी उससे ज़्यादा वक्त जेल के अंदर गुजारा है, जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट फर्निश श्योरिटीज और बेल बॉन्ड्स, क्योंकि उनके पास ना तो कोई इतने पैसे थे या इतनी प्रॉपर्टी थी जिसको वो प्लेज कर सकते, ना उनको उनके बिहाफ पे कोई बंदा बोलने आता। उसकी रीज़न ये है, आज आप किसी भी रीजनेबल सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी एक ऐसे शहरी को पकड़ लें जिसकी माशरे में थोड़ी सी इज्जत है, आप उसको कहें कि मेरे पे केस हो गया, मुझे आप एज अ श्योरिटी कोर्ट में गवाही दे दें या कोर्ट में श्योरिटी दे दें कि आप मेरे बिहाफ पे ये बात कर लें, आप मेरी श्योरिटी बन जाए। आई वुड टेल यू इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हम अपने क्लाइंट्स को ये सारी बातें बताते हैं तो वो कहते हैं सर कोई भी नहीं आता, इवन फैमिली मेंबर्स डोंट शो। लोगों की कोशिश ये होती है, लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि हमें एटलीस्ट एक लिटिगेशन के प्रोसेस में नहीं फंसना, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व है, हम ही ना पकड़े जाएं, हम ही ना फंस जाएं बीच में। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारे लोग भागते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारा टाउट सिस्टम हमारी कोर्ट में पाया जाता था जिसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन रहा था कि कोई भी जो टाउट्स घूम रहे थे वो कहते थे कि हम श्योरिटी बन जाते हैं, हम बेल बॉन्ड्स दे देते हैं, आपको नहीं देना पड़ेगा, और कम पैसे में बेल बॉन्ड्स दे देते थे। लेकिन अब अदालतों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब एक इंसान का जब सोशल स्टेटस ही इतना नहीं है, जब वो फाइनेंशियल इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बेल बॉन्ड जो है वो फर्निश कर सके, तो वो किस तरीके से अपनी बेल को फर्दर लेके जाएगा? डिस्पाइट द फैक्ट उसको बेल मिल जाएगी, रहेगा तो वो तब भी कस्टडी में, अनलेस और अनटिल ही फर्निश द बेल बॉन्ड एंड द श्योरिटीज। That's one aspect to it. The other aspect of your question was the political influence. Usually, I would say that since I've litigated a lot of cases in the lower courts, जब हम बार ओहदेदारान की बात करते हैं, एक बार पॉलिटिक्स एंड देन लाइक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, so I've never seen like mainstream politics influence any judge in this particular cases bail stages के ऊपर, क्योंकि ऐसे कम ही होता है। To some extent we can say that yes, if any uh, big name from the bar comes up or shows up, तो किसी हद तक इन्फ्लुएंस अदालत को कर लेते हैं, या किसी हद तक वो फेस रिकग्निशन होती है। कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ पे बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो फेस वैल्यू पे रिलीफ मिलता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी होती है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट आई पर्सनली इन माई ओन एक्सपीरियंस आई नॉट कम अक्रॉस एनी केसेस जहाँ पे ऐसा मेरे साथ हुआ हो, बट अपेरेंटली ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और शायद होता भी हो। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपका केस अच्छा है, आपने केस स्ट्रॉन्गली प्लीड किया है, आपके अच्छे ग्राउंड्स हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जज ऑल द वे अराउंड एक 180 की फ्लिप ले और जाके बिल्कुल ही आपके खिलाफ केस करते, आपके खिलाफ फैसला देते जस्ट बिकॉज एनी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू और अगेंस्ट यू। तो ऐसा कम ही होता है, क्योंकि उसने अपनी जो जजमेंट होती है उसके अंदर मेंशन करना होता है कि वो जजमेंट क्यों लिख रहा है। तो
उन्हें भी जवाब देना पड़ता है, बिकॉज अपेरेंटली अगर वो आपकी बेल जो बनती है नीचे वो खारिज हो जाती है, आप हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगी कि इस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने क्या हरकत की है। तो इन चीज़ों में किसी हद तक जो है चेक एंड बैलेंस देखा जाता है। बट a very interesting scenario in my own personal experience was जब इमरान खान साहब की बेल शाम को 7 बजे अलाउ की गई थी। आई एम नॉट लाइक सेइंग कि ही वाज नॉट ही वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, उसकी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ही वाज अ वीवीआईपी पर्सन, अदालतें भी उसके लिए बैठी। बट वो वाकया कुछ इस तरह का था कि जब मेरा एक क्लाइंट था, देयर वाज अ प्री अरेस्ट बेल, उसकी कंफर्मेशन हियरिंग थी, एंड व्हेन वी litigating pre-arrest bails या कोई भी bail hearing हो, तो they usually take up at 8 am sharp, 8 बजे जज बैठ जाते हैं और उस केस को सुना जाता है। तो apparently due to some reasons he got late and he reached court around 8:30 to 8:45, but the presiding officer was very strict one and he said कि no, 8 means 8 o'clock and I'm not going to allow his bail. The bail was declined and apparently we have to go to another bail round और फिर उसकी bail confirm हुई, बट ये चीज़ देखी गई थी। तो व्हेन वी से अब जब वो बंदा जो मेरा क्लाइंट है वो देख रहा है कि यार सेम सिनेरियो में एक पॉलिटिकल फिगर की बेल जो है वो शाम 7 बजे तक हो रही है, वो लेट आए ना आए, अदालतें बैठ के इंतजार कर रही हैं उसका। तो इस तरह की चीज़ें कुछ डिमोरलाइज करती हैं लिटिगेंट्स को, because then they realize that we are some kind of low tier people, हम थोड़ा वो गुलामी की सतह के ऊपर आते हैं, देन देयर आर लाइक बादशाह काइंड ऑफ पीपल जिसके लिए अदालतें भी अपना बिहेवियर चेंज करती हैं। हाँ, आई वुड एग्री टू दैट एक्सटेंट के कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाएगा, बिकॉज ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आना है, प्रोटोकॉल होता है, चीज़ें बिल्कुल इस तरह नहीं होती जिस तरह काम लिटिगेंट आता है, तो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमा फिशाई लेवल ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन इन द कोड ऑफ लॉ, एक आम इंसान के दिल में ये बात ज़रूर आती है कि शायद मुझे इस तरह का रिलीफ अदालतें ना देती, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, कि आपको बुलाया जाए, सारे केस आपके क्लब किए जाएं, बेल दी जाए। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मिस्टर खान बट एनी अदर पॉलिटिकल फिगर एज वेल, कि जहाँ पे चीज़ें देखने में आई हैं इन द पास्ट एज वेल, कि अदालतों ने दे हैव एक्सटेंडेड एन आर्म ऑफ कर्टेसी टू दीस पॉलिटिकल फिगर्स टू गिव देम रिलीफ। तो इस तरह की चीज़ें शायद किसी हद तक लोगों को डीमोरलाइज किया, लिटिगेंट्स को, जो नॉर्मल पर्सन है, जो हमारे नॉर्मल क्लाइंट्स हैं डेली बेसिस के, उन्हें किसी हद तक डीमोरलाइज कर सकते हैं। तो relating to your earlier point, social status के बारे में जो बात है, in my point of view हमारी jails already overburdened है और हमारी I would say कि majority of the population is living below the poverty line, right? So ये sureties और bail bonds का जो पूरा concept है ये, और I would say कि जो हमारा crime rate है वो भी उसी poverty line से नीचे रहने वाले लोगों में ज़्यादा exist करता है। तो दे आर एट अ डिसएडवांटेज अगर हम देखें इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो मेरे ओपिनियन में देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव रेमेडी फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि इस तरह के बेल बॉन्ड या इस चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Definitely, there should be. Unfortunately, we haven't come across any practical solution to that. क्योंकि अदालत को भी कोई श्योरिटी तो चाहिए, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी किस्म की गारंटी चाहिए कि ये इंसान जो है वो भागेगा नहीं, अदालत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फेस करेगा, अपीयर होगा, तो उसके बिहाफ पे कोई गारंटी देने वाला भी चाहिए। अपेरेंटली देयर वर सम सजेशंस, जैसे हमने इनको सजेशन दी थी कि स्टेट के एक्सपेंस के ऊपर इस चीज़ को अगर लेकर जाया जाए या बेल बॉन्ड्स को कम, उसकी वैल्यू को कम किया जाए, तो इस चीज़ पे कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको डेफिनेटली रिलीफ देने की कोशिश करते हैं व्हेन वी रिक्वेस्ट देम कि इंसान जो है या ये पर्टिकुलर एक्यूज इतने वैल्यू का बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर सकता, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दी जाए, तो वो वैल्यू थोड़ी कम की जाती है। बट अपेरेंटली वी हैवंट कम अक्रॉस एनी अल्टरनेट वे जिसको प्रैक्टिकली इन्फोर्स करवाया जा सके थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ, अगर कोई इंसान जो है वो अपनी बेल बॉन्ड्स या अपनी श्योरिटीज फर्निश नहीं कर पाता। And if there is in field that I'm not aware of, but in my practical experience, since we appear in court on daily basis, I haven't come across any alternate remedy to that, unless or until the other party जो है वो उसको माफ कर दे, केस खत्म हो जाए। उसके अलावा अभी तक इसमें कोई practical solution जो है वो डिवाइस नहीं किया।
राइट, थैंक यू। सो जहाँ पे हम प्री ट्रायल डिटेंशन की बात करते हैं तो हम is there any way that we can ensure that it is not being used as a punitive measure before a verdict is reached? कि क्या mechanism है in place कि हम प्री ट्रायल डिटेंशन में मिसयूज को प्रिवेंट कर सकें? So, Fazila, when we talk about pre-trial detention, we are talking about the arrest during the trial period या before the trial period. जो pre-trial detention है, इसका concept is very new. And it's not actually codified anywhere in the law for the time being in force. हमने कहीं CRPC में या किसी इवन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्री ट्रायल डिटेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा गया. बेसिकली कॉन्सेप्ट ड्राइव कहाँ से होता है? फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, इन सारी चीज़ों से डिवाइस करके हमने न्यू टर्म पॉइंट की है प्री ट्रायल डिटेंशन, वेयर वी बिलीव that if any person is being detained during the trial, he is suffering from another sort of punishment. अगर हम साइकोलॉजिकली देखें इस चीज को, तो जब भी आपको कोई पुलिस अरेस्ट करती है, there is attached a certain level of humiliation to it. They attach a certain level of apprehension that they are going to use physical torture on you. Then once you go to jail, वो एक अलग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो एग्जिस्ट करता है. Having said that, if you go through section 53 of CRPC, which defines punishments, there is no such concept of punishment as an arrest. Simply उसको बताया जाए तो अरेस्ट करना किसी को would not be uh, taken or would not be defined as a form of punishment. कानून उसको punishment नहीं समझता, rather it is a procedure that has to be taken up by the law enforcement agencies for the fruitful investigation, to protect the evidence, to protect the temperance against the prosecution case, to protect the foreseeing repetition of the offences by the alleged offender or alleged accused person. तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अरेस्ट का एक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी पावर पुलिस को दी गई और उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के लिए और एक रेमेडी के लिए बेल को अलाउ कर दिया गया. अब कोई भी पुलिस ऑफिसर जब आपको अरेस्ट करता है तो उसने आपको 24 आवर्स के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना. अब मजिस्ट्रेट ने भी मैकेनिकली आपका रिमांड नहीं देना. मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस की बात सुनेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा, और आपकी बात सुनने के बाद भी कि क्या इस रिमांड को ये पुलिस की कस्टडी में आपको मजीद रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. देन दे डिसाइड कि इसको फिर फर्दर रिमांड एक्सटेंड करें, और वो भी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ 14 डेज इंक्लूडिंग द डेट ऑफ अरेस्ट. तो 14 दिन तक आपको फिजिकल रिमांड देगा, जिसमें पुलिस हर, और वो फिजिकल रिमांड भी वो 14 दिन का एक साथ नहीं देते, दे गिव यू लाइक 2 डेज 3 डेज. तो इसमें पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है. जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती और अदालत देखती है कि 14 दिन तक इनके पास बंदा रहा है और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो उसको वो भेजते हैं जुडिशियल. अब इन्वेस्टिगेशन उसमें करें ना करें, इन 14 दिन के बाद जो रिमांड है वो जुडिशियल रिमांड में चेंज हो जाएगा. अब वो जेल चला जाएगा. ठीक, अब उसमें वो अपनी बेल भी अप्लाई कर सकता है, पोस्ट अरेस्ट बेल. And even during the remand stage, he can ask or make a case of discharge. मतलब he has the remedies before the competent court or the competent magistrate कि वो अपना केस बना सके कि जनाब मेरे खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई केस नहीं बनता, तो मुझे यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाए. डिस्चार्ज मीन्स कि उसको उस फौरन पुलिस की कस्टडी से ले लिया जाएगा. केस में जब तक कोई न्यू ग्राउंड नहीं आएगी, केस प्रोसीड नहीं किया जाएगा. सिमिलरली आपको पोस्ट अरेस्ट बेल का भी राइट अदालतों ने दे दिया कि अगर आप अरेस्ट हो गए हैं एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस कि आपके ऊपर केस नहीं बनता, देयर इज अ मैलापार्टी ऑफ द कंप्लेनेंट, मैलापार्टी ऑफ द पुलिस, और द केस इज ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट लाइक रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर योर अरेस्ट, तो आप उसमें अदालत में अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं. सो सिमिलरली दिस लाइक देयर आर चेक एंड बैलेंसेस थ्रू आउट दिस अरेस्ट प्रोसीजर्स. हम गलती यहाँ पे करते हैं, वी एक्सक्लूड दिस
remedies from the arrest procedure, and we believe that the arrest itself is a punitive measure. बहुत सारी judgments आपको available हैं on the subject that bail cannot be withheld as punishment. किसी की भी bail इस point पे cancel नहीं की जा सकती कि हमने इसको as a punishment bail देनी. Punishment देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ court of competent jurisdiction को है, that is the trial court. Bail courts को punishment देने का इख्तियार नहीं है. But why they decline the bail would depend on the circumstances of the case and the reasonable grounds and the incriminating material available. अगर अदालत को लगता है कि इंसान को अगर बेल दे दी गई है, एक्यूज को बेल दे दी गई, तो प्रोसिक्यूशन केस के साथ टेम्परिंग हो सकती है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, या किसी भी रीजन की वजह से फॉर द टाइम बीइंग इसकी कस्टडी जरूरी है कि पुलिस के ऑफिशियल्स के पास रहे, तो वो बेल डिक्लाइन कर देते हैं. So for this reason, I would not point pre-trial detention as a form of punishment. और ना अदालतें इसको उस फॉर्म के अंदर लेके जाती हैं, because they are more inclined towards giving relief to the accused person. Having said that, आप कहते हैं कि मेरी अदालत ने बेल खारिज कर दी, मैं पुलिस की हिरासत में रहा, ट्रायल कोर्ट में आके मुझे एक्विटल मिल गया. ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आपने तो जुर्म किया ही नहीं था, यू वर इनोसेंट ऑफ ऑल द चार्जेस एंड नाउ यू आर ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस अगेंस्ट यू बाय द कंप्लेनेंट और द पुलिस ऑफिशियल. अब आप ये कहते हैं कि चूंकि मैंने इतना टाइम जेल में गुजारा है, वो या मैंने अरेस्ट में गुजारा है, वो तो मेरे साथ ज्यादती है, उसके लिए कानून ने रेमेडीज दी गई. आप उस कंप्लेनेंट के खिलाफ सूट और डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, और you can go against him under section 182 CRPC for malicious prosecution. अब इवन के अगर पुलिस आपके साथ इस तरह का रवैया करे खुद कंप्लेनेंट को, तो उनके खिलाफ भी आप malicious prosecution का केस फाइल कर सकते हैं. तो there exists alternate remedies to this thing कि अगर आपको ऐसा फील हो या ये साबित हो जाए कि आपको अनलॉफुली डिटेन किया गया था प्री ट्रायल डिटेंशन के अंदर, तो आप उसके लिए रेमेडी अवेल कर सकते हैं. और इन द सेकंड सिनेरियो, अगर आपको सजा हो जाती है और आप ऑलरेडी कुछ टाइम अपने ट्रायल के दौरान जो है वो काट चुके हैं, तो अदालतें उसको जो है कंसीडर करती हैं. जैसे अगर 1 साल उसने अपना जेल में गुजारा है ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, तो उस 1 साल को भी उसकी पनिशमेंट के अंदर कंसीडर करके रिलीफ अक्यूज को दिया जाएगा, उसको बंदे को दिया जाता है, बेनिफिट उसको प्रोवाइड किया जाता है. तो इसलिए अरेस्ट इज नॉट स्ट्रिक्टो सेंसो अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. अगर वो ऐसा कुछ होता है तो देयर आर अल्टरनेट रेमेडीज, बट वी कैन नॉट से दैट प्री ट्रायल डिटेंशन इज अमाउंट टू सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट. But if we see it in the perspective of Pakistani police and how they are notorious for inflicting violence, I think it becomes a form of punishment, in my opinion. Fazila, I totally agree with you. I would never become a justifiable. I would never give any justification for the police torture thing, and we know for a fact that it happens. There are like plenty of ways and tricks in their sleeves which they use के निशान तक नहीं पड़ता, और इवन के किसी इंसान को 5-6 बंदों के साथ एक सलाखों वाले कमरे में बंद कर देना is a mental torture in itself, but for the time being कानून ने उसको as a punishment consider नहीं किया. इसलिए क्योंकि law enforcement agencies के लिए भी require some sort of methods to conduct their investigation, and now they are not justifying the torture because अगर कोई पुलिस ऑफिसर आप पे torture करता है या आपको मारता है और आपके मेडिकल में ये बात साबित हो जाती है कि आप पे torture किया गया है, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप प्रॉपर केस इनिशिएट कर सकते हैं. क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? That's another debate. In my own experience, जब भी किसी क्लाइंट को या किसी एक्यूज को जब पुलिस उठाती है, तो वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है. तो आई बिलीव कि इसमें फर्दर लेजिस्लेशन की शायद ज़रूरत हो, बट फॉर द टाइम बीइंग इन द एप्लीकेबल लॉ और द लॉ enforced in the state at the moment, arrest is not can not be considered as pre-trial detention or as a punitive measure. इन चीज़ों को as a punishment नहीं consider किया. और क्योंकि एक
एक जो जनरल आइडिया है वो ये है कि सिस्टम बहुत फ्लॉड है या सिस्टम बहुत करप्ट है. तो आपके ख्याल में हाउ वेल डज द करंट बेल लॉ इन पाकिस्तान अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड द राइट टू लिबर्टी? और कोई इस तरह के इंस्टेंसेस हैं जो आप कोट कर सकें वेयर यू थिंक दैट दीज मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड? Okay, so as I've stated earlier, the presiding officers, and it's really good structural idea of the legislature that they have appointed the judiciary over the law enforcement agencies, that there is always a remedy and check and balance from the courts of law on these cases. So system is flawed, system is corrupt, police officials abuse their power, but you have a way to make your case. That's why when you go to courts, आप सुबह चले जाएं तो आपको लाखों की तादाद में केसेस मिलेंगे जो बेल स्टेज पे लिटिगेट हो रहे होते हैं. Most people believe and trust the judicial system of Pakistan की अदालतें सुनेंगी, and I would like literally advocate for that we personally believe that अदालतें सुनती हैं. Because when we are appearing before the courts और जब हम अपने केस को प्लीड करते हैं, now it all depends on how you plead your case. Now it comes to the point कि आपका वकील कितना अच्छा है या आप अपना केस किस तरीके से प्लीड करना चाहते हैं. So that's not part of advocacy. अपने केस को किस तरह लेके जाते हैं, how well informed are you with the current applicable laws and the recent precedents और landmark judgments, और अपने केस को किस तरीके से अपनी अदालत के सामने प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज फैक्टर मैटर्स, बट अदालतों का मौजूद होना इज एक्चुअली द फिल्ट्रेशन प्रोसेस जहाँ पे करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं. जब अगर आप पुलिस ऑफिशियल आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपको ओपिनियन नहीं लिख रहा, आप अदालत में जा सकते हैं. अगर आपके ऑफेंस कुछ और लगते हैं और पुलिस ने कुछ और लगा दिए हैं, तब भी आप अदालत में जा सकते हैं. पुलिस आपका वर्जन रिपोर्ट नहीं कर रही, तब भी आप अदालत से जा सकते हैं. एंड ऑल दीज circumstances are being conducted during the investigation, during the bail stages. तो आप हर चीज यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि सिस्टम करप्ट है, पुलिस ऑफिशियल जो है वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा वर्जन लिखने के लिए रेडी नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये लिखना ही नहीं चाह रहा. There are different remedies to that. You can file a petition under 22A6 CRPC. और इवन मैंने तो यहाँ तक अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मुगला हजरात ने बेल स्टेज के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा कि सर ये मेरा बयान नहीं लिख रहा, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पुलिस ऑफिशियल को बुला के कहा कि आप इसका बयान लिखें और अभी लिखें बैठ के. तो यहाँ इस तरह की भी प्रैक्टिस की जाती है. I personally felt and experienced that courts are always inclined towards the protection of the right of liberty and the fundamental rights of the accused, and they definitely consider the presumption of innocence to the proposed and alleged accused person, and extend the benefit to the accused person in the bail stage as well. And there are like plenty of judgments available जहाँ पे इस बात को consider किया गया है that benefit of doubt should also be extended at the bail stage to the accused person. और कोई आप कोट कर सकते हैं इस तरह का कोई केस या इंस्टेंस जहाँ आपको लगा हो कि these principles they have been compromised? In my own practice, I haven't encountered anything. Maybe we are very vigilant considering the rights of our clients, but I have encountered a few cases जहाँ पे जो है केस या तो प्लीड ठीक तरह नहीं किया गया हो, या फिर पुलिस ऑफिशियल्स ने इस हद तक जो है ज्यादती करती हो केस को बनाने में या एविडेंस प्लांट करने में कि वो चीज़ देखने में आती है. अपेरेंटली जब आप लॉ ऑफ बेल को देखते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी फ्लेक्सिबल. कुछ जजेस हैं वो देखते हैं कि इसमें सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट करनी चाहिए, और कुछ जजेस जो हैं इवन के लेटेस्ट जजमेंट्स भी हैं कि आप डीपर एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं एट बेल स्टेज. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंटेटिव असेसमेंट, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो अपना जब ओपिनियन देते हैं तो अदालत देखती है कि चूंकि प्राइमा फेशियाई लग रहा है कि इस बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उसकी डीपर एप्रिसिएशन में नहीं चाहती और फिर उसी के हद पे फैसला दे देती है. माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट वंस वी आर लिटिगेटिंग अबाउट द बेल स्टेज, और वहाँ पे सबसे बड़ी कंसिडरेशन इज द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन, दैट इज अ फंडामेंटल राइट. Despite the fact that the lower judiciary is not the courts of constitution,
they are not the constitutional court and they are not the protector of the fundamental rights. They are the procedural courts and they have to follow the procedure. Despite the fact, the parameter of justice demands that the presiding officer must consider all the factors before deciding regarding the right of liberty of any particular person. So my opinion is that whenever a case is being litigated, that presiding officer must give a reasonable appreciation of evidence and reasonable appreciation of material available to it. खाली टेंटेटिव असेसमेंट करके आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे अगर शायद डीपर एप्रिसिएशन की जाती तो उनको बेल ग्रांट हो जाती, बट बेल ग्रांट नहीं हुई और बेल कैंसिल हो चुकी. So that's my personal opinion. Apart from that, yes, we see it on daily basis कि जो पुलिस है they like put hand in glove with the complainant, पैसे ले लेते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, ओपिनियन उनकी मर्जी का ड्रॉ किया जाता है. एंड जैसे मैं अपने केस के बारे में बात करूं तो एक इसी इसी वेरी रीसेंट केस ऑफ दिस नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उस केस को उस कमीशन ऑफ ऑफेंस को हुए और एफआईआर में ऑलमोस्ट 12 से 15 दिन का डिले था. रोड पे एक्सीडेंट हुआ था. रोड पे एक्सीडेंट होने के बाद सारी चीज़ें वहाँ से हट गई, बारिशें चल रही थी, बारिशें हो गई, ज़मीन धुल गई, सारा कुछ हो गया. एंड सरप्राइजिंगली आफ्टर द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज सबमिटेड द रिपोर्ट कि मैं जाए वकुआ पे गया था, मैंने वहाँ से ए बी सी मटेरियल कलेक्ट किए, which I am not sure how he collected that. It was a very busy highway और वहाँ से 12 दिन तक किसी ने कोई कोंगलूद मिट्टी भी नहीं साफ की और किसी ने वो कंकर भी नहीं उठाए, वहाँ से शीशे भी नहीं उठाए और सफाई भी नहीं हुई सड़क की. और 12 दिन बाद उस आईओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मैं गया हूँ, वहाँ से मैंने कोंगलूद मिट्टी भी कलेक्ट की, जो विक्टिम है उसका ब्लड वहाँ पे गिरा हुआ था और वहाँ से मैंने शैटर्ड ग्लासेस भी लिए गाड़ी के और सारा कुछ मैंने कलेक्ट किया. So yes, these kind of things happen, but again I would say that it all depends on how you plead your case before the presiding officer and how the presiding officer is observing and appreciating the evidence and then deciding the final outcome of the case, because police opinion is not binding. हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि that in the discretionary power every judge has his own demeanor. I've encountered both the judges in such a way कि मैं एक जज के पास गया हूँ जिसने पुलिस ओपिनियन को totally disregard किया. He said कि I don't care what police says, आप अपना केस बताएं, कंप्लेनेंट काउंसिल अपना केस बताएं एंड डिफेंस काउंसिल अपना केस बताएं. And I've seen those judges as well जो कहते हैं कि सर आप अपना एक मिनट रुकें, मुझे पहले पुलिस ओपिनियन को पढ़ने दें कि पुलिस ओपिनियन क्या कहता है इसका. So yes, there are discretion और इसमें objectivity नहीं है, because since this is a taziri power, a discretionary power, so the presiding officer must apply his own mind under the light of law and the prevailing sentiments. पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सीआरपीसी में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इस बात का कि बेल ग्रांट क्यों करनी चाहिए, वो अक्यूज पे है. अब कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स या अदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जैसे यूके है, वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है प्रोसिक्यूशन पे. तो इन दैट सेंस डू यू थिंक दैट आवर जस्टिस सिस्टम नीड्स अ रिफॉर्म? Okay, so just to clarify this, even in Pakistani courts, even at bail stage, burden of proof is always on the prosecution and not on the accused side. When we say that we apply for the bail, जब हम bail apply करते हैं, it's not the burden on us to prove कि हमने prove करना है कि हमने offense नहीं किया. हमने अपना केस मेड आउट करना होता है and the prosecution has to uh, make their case किसने offense किया. The burden of proof is always on the prosecution. Even if you read section 497 apparently, उसके अंदर भी बात लिखी गई है कि बेल देने से पहले प्रोसिक्यूशन को नोटिस दिया जाएगा कि इसको बेल क्यों ना दी जाए. अब उस नोटिस का जो मकसद है that is that prosecution must be awarded an opportunity to make their case and their case. And when we say that burden of proof is on the prosecution to make their case, तो उसमें भी बात आती है कि टेंटेटिव असेसमेंट है, यहाँ पे proving their case beyond the shadow of doubt at the time of the trial, before the competent court of jurisdiction. इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है. एंड अगेन burden of proof is always on the prosecution, that they have to prove that this person must not be given the bail because of these reasons. As I said, that reasonable ground must exist before the arrest.
तो वो फैक्टर ही यही है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि सर आप इनको बेल इन इन वजूहात की वजह से ना दें. So the burden of proof is on the prosecution. Are there any other shortcomings हमारे CRPC में that needs reformation? Yeah, I would say that a very disturbing factor for me is, or any other practicing lawyer would be, that there are some practical aspect to bail. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ इस तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें पता होता है कि ये बेल लोअर कोर्ट से नहीं होगी, ये बेल हायर कोर्ट से होगी. उसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. 9C का केस आप ले लें, नारकोटिक्स का, और उसमें आप जब देखते हैं कि 1250 ग्राम से ज़्यादा की अगर कोई भी मंशियात बरामद होती हैं, तो हमें पता होता है कि यार ये बेल नीचे से तो नहीं मिलेगी, ये बेल के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा. इवन इन द मैटर्स ऑफ 302 पीपीसी मर्डर केसेस में भी हीनियस ऑफ क्राइम को देखते हुए या ग्रेविटी ऑफ क्राइम को देखते हुए फैक्ट्स को पढ़ के भी अंडरस्टैंड कि ये बेल नीचे से नहीं मिलेगी. सिमिलरली 489F चेक बाउंस के केसेस के अंदर भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नीचे से बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी. I personally believe, and I am of the opinion, that it is an extra added burden to the litigant. Reason being that litigation is not cheap. You have to have a good lawyer who will cost you a good amount. Then you need to pay for your bail bonds. Then you need to fund the sureties, and then the ancillary charges that comes along with it. आप एक ईयर में अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, पूरा अपना केस बिल्ड करते हैं, नॉइंगली कि यहाँ से बेल नहीं मिलनी है, मेरे को फिर ऊपर ही जाना है. In my personal opinion, I believe that it is not fair to the client, because अगर the superior courts are of the opinion कि इस मैटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लोअर कोर्ट इसको डेली नहीं कर सकती, then the lower courts are incompetent. फिर आप उनको बंद कर दें और सारे केसेस जो है आप ही सुनना शुरू कर दें. But if you believe that they are competent, then the case should remain to them. और वो कोर्ट्स इतनी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें, डिस्पाइट बीइंग द प्रोसीजरल कोर्ट, अपना जुडिशियल माइंड प्रॉपर इस्तेमाल करके फिर बेल का फैसला करें. और हम इस जो हायरार्कियल बैरियर्स आ चुके हैं कि ये बेल नीचे से होनी है, ये या बेल सुपीरियर कोर्ट से होनी है, उससे निकल के मेरिट्स ऑफ द केस को डिस्कस करके फिर बेल का फैसला किया जाए. इससे एक तो क्लाइंट के ऊपर बर्डन बहुत कम पड़ेगा और मुतला के ऊपर बर्डन बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट योर केस before the inferior court, and then you need to go to the superior court. फिर आपको हाई कोर्ट वगैरह अपना केस करना पड़ेगा. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ही आपको अपना केस प्लीड करने की जरूरत है. और जब सबऑर्डिनेट कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उसको लिटिगेट कर सकता हो, एडजुडिकेट कर सकता हो, then there is no need to go to the high court. High court already overburden है अपने केसेस को लेकर, तो हम मजीद उस पर बर्डनाइज क्यों करते हैं सारी बेल्स को लगाकर. वही बेल जो है वो लोअर कोर्ट्स को लिटिगेट करनी चाहिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उस पर फैसले देने चाहिए, एडजुडिकेट करना चाहिए. इससे बहुत सारा बर्डन कम होगा. सेकेंडली, आई वुड बिलीव कि देयर मस्ट बी एनी मैकेनिज्म अवेलेबल टू दोज काइंड ऑफ इंडिजेंट प्रिजनर्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो बेल बॉन्ड्स नहीं दे सकते, जो श्योरिटीज फर्निश नहीं कर सकते, उनके लिए एक सेपरेट मैकेनिज्म जो है अवेलेबल होना चाहिए. And again, as I've said in your last question, that I personally believe that there must be reasonable appreciation to the merits of the case before deciding the outcome of the bail, because the right of liberty to a person is a fundamental right, and before curtailing to that right, we should be very careful, and the presiding officer should be very careful that किसी भी तरीके से किसी का right of liberty जो है वो curtail नहीं होना चाहिए. Apart from that, I personally believe that if the bail is declined, then the trial date should be set instantly. आपको एक टाइम मिल जाना चाहिए कि इस टाइम के अंदर अगर आपका ट्रायल हो जाएगा. That would prevent the years long of pre-trial detention in jail or in the custody of police. वो चीज़ कवर हो सकती है. And even at the bail stage 496 के ऊपर petty crimes के ऊपर अदालतें जो हैं केस डिस्चार्ज कर सकती हैं. सिमिलरली अगर अदालतों को बाद में भी लगे कि मैटर जो है एग्जिस्ट नहीं करता या ये इस केस के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, तो सेम रेमेडीज शुड बी अवेलेबल टू दैट एज वेल. बट दैट्स द जॉब ऑफ द लेजिस्लेशन कि वो उसके ऊपर ऐसे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए जहाँ से लिटिगेंट्स को थोड़ा फायदा हो सके, कंसिडरिंग बोथ द कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड पर्सन इन माइंड,
because we have to have a harmonious kind of mechanism in the state जहाँ पे किसी के साथ ज्यादती ना हो. We sometimes tend more towards the accused person and forget about the victims, but the mechanism should be in the ideal uh, हारमोनियस काइंड ऑफ थिंग, एक ऑप्टिमम काइंड ऑफ मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे दोनों के राइट्स, योर कंप्लेनेंट एंड एक्यूज, should be considered before deciding any matter. All right, thank you so much, Vishal, for today. We had an enlightening session, actually. There are many things that we didn't know about bail, but they are pretty clear now. So thank you so much for today. You're most welcome. Thank you for having me. It was again an interesting session, and it is very helpful for me as well, because when we need to come to such kind of judicial talks or like brainstorming sessions, we need to revise our own concepts. So even when I was preparing, I had to go through a lot of like basic concepts again and again. So it's like a mutual beneficial thing. So thank you for having me, and I believe and I hope that this session might produce some fruitful result for the viewers or the law students that who are watching. Definitely, it has particularly helped me because I'm gonna argue a bail on Thursday actually in class. So it would Very be best of helpful. luck, and I'm sure the kind of questions that Thank you you. asked and appreciation of legal concepts that you have is very commendable and appreciable. And I'm going to very sure that you are going to get bail for your client, inshallah. Yeah, hopefully, hopefully. Thank you so much once again.